Welcome, Vicky Sharma. Yes, in yesterday's class, what we have seen, in yesterday's class, we understood about angiotensin 2 receptor antagonist and ACE inhibitors. These both the drugs we have discussed in detail, right? In today's class, let us try to learn about calcium channel blockers, their indications, and how calcium channel blockers are useful in the hospitals. And are they really useful as antihypertensive drugs? If they are used as antihypertensive drugs, in which condition do we usually use? Okay. So all concepts associated with calcium channel blockers we will discuss in today's lecture. Okay, see, before understanding about these drugs, first let us see some basic concepts. First, very important basic concept is our body has so many tissues, right? In our body, the main tissues which will cause hypertension are cardiovascular tissue and blood vessel tissue, right? These are the two tissues. In our body we have two tissues, one is heart and one is blood vessels. So these two tissues are mainly associated with hypertension. How will they cause hypertension? Remember, see, actually in our blood has so many minerals, it has electrolytes, it has hormones, everything. In that, calcium is also one element which is present in the blood, and the normal level of calcium should be between 9 to 11 mg per dl. Okay, the calcium content in the blood is 9 to 11 mg per dl. This point we already know. Now, before understanding about the hypertension and calcium, what is the significance of calcium in our body? What is the signification of calcium in our body? Number one, very very important function of calcium is it helps in it helps in formation of bones. Number one. Number two, it helps in nerve conduction. It helps in nerve conduction. Okay. See, in the nerves we have sodium, potassium, calcium, all the ions. If calcium is entering into the nerves, that means it is increasing the nerve activity. So in nerve activity also calcium is important. Number three, calcium is very very important main ingredient for depolarization of muscles. याद रख लो, depolarization of muscles. Not only nerves. Nerves depolarize हुआ means when nerves gets depolarized, their activity increases, and their activity means it will increase its release of its neurotransmitters. Okay. And in muscles particularly, calcium is also important in muscle contraction. When will these muscles contract? Whenever the calcium enters into the cells through the calcium channels. Actually we have T type calcium channels, we have L type calcium channels, and we also have voltage gated calcium channels. About these all channels I'll tell later. Okay, these are different types of calcium channels. Especially calcium will enter into the muscles through voltage gated calcium channels. जब calcium अंदर चले गया तो what happens? It will cause depolarization and muscles will be contracted, and through that it will show its action. Okay, whatever action which is seen on the tissue. So these are some basic things of calcium in the body. Now we will try to correlate this calcium ion on the cardiovascular system, which is associated with blood pressure. See, on cardiac myocytes we have certain calcium channels,
And on blood vessels also we have certain calcium channels. If calcium ions gets opened in the myocardial tissue, then calcium ions tries to enter into the myocardial cell, and it will cause severe depolarization, and it will cause increased activity of heart. That may be the force of contraction, which is called positive ionotropic effect. It may be increased heart rate. Okay, that may be positive gonotropic effect. Okay, so when calcium ions enters into the cardiac myocyte, it will increase the force of contraction, it will increase the cardiac heart rate, and through that what it does, it will improve the output, that it will improve the cardiac output, and through that it will increase blood pressure. So calcium is entering into the cell and it is causing increased cardiac output, and it is leading to hypertension simply. If we block those channels, what will happen? Obviously the blood pressure will decrease. Okay, and on blood vessel also, whenever calcium ions tries to enter into the smooth muscles of blood vessels, not into the lumen, not into the lumen, we are talking about calcium channels, calcium ions into the cells of the muscles. Here in the blood vessels we have seen three layers. Okay, in that layers we have smooth muscles, blood vessels, smooth muscles. In that smooth muscles, if calcium enters into the cell cytoplasm, it will be depolarized, and through that smooth muscle contraction occurs, and through that blood vessel will be contracted, or blood vessel, that is called vasoconstriction. When vasoconstriction occurs, what will happen? When vasoconstriction occurs, lumen size of the blood vessels will be decreased, and it will further cause increased blood pressure, that is hypertension. So in this also, if we block the calcium ions on the blood vessels or on the heart, what it is doing, it is decreasing blood pressure. That's why we are giving calcium channel blockers. This is the basic thing first we have to understand. This point clear, everybody? And see, if we block calcium ions, for example, just imagine this is a cell. If we block calcium channel, what will it cause? Will it cause hypotension, or will it cause hypocalcemia or hypercalcemia? क्या cause करेगा? Hypotension. Okay, I am asking you, if we block the calcium ions on the cells, will it cause hypocalcemia, or will it cause hypercalcemia? क्या करेगा? अंडे पे पैर रख दिए सब लोग। देखो, सुनो मेरी बात। There is no relation with the blockade of the calcium channels on the cell membrane. It will neither cause hypocalcemia nor hypercalcemia. See, calcium ions, जो calcium is there, calcium which is present in the cell, calcium which is present in the blood is 9 to 11 mg, 9 to 11 mg per dl. Every 100 ml में 9 to 11 mg रहता, and this calcium is particularly useful for formation of bones, okay, and for different other causes. Now, the calcium which is entering into the cells is very 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 negligible amount. The calcium which is entering into these cells is very very negligible amount. अगर calcium cell के अंदर जा रहा, तो immediately after some time the entered calcium will come out. The entry of calcium inside the cell is depolarization, and immediately the same calcium, if it comes out, that is called repolarization. Okay, depolarization, repolarization, समझ गए? अब देखो, always we will try to measure the calcium only in the serum or in the plasma. Always we will
calculate the calcium levels in the serum. We will not calculate calcium in the cells. सेल के अंदर कैलकुलेट नहीं करते. अगर theoretically if we see the calcium which is present from the blood, it is entering into the cells. That means what it will cause, theoretically what it may cause, it may cause hypocalcemia or hypercalcemia. अरे फिर हाइपरकैल्शियमिया बोलते. actually actually it will not cause anything, but theoretically I am asking. ऑलवेज कैल्शियम इज मेजर्ड फ्रॉम द ब्लड. ब्लड के अंदर का कैल्शियम अपन मेजर करते हैं, सेल के अंदर का कैल्शियम कभी मेजर नहीं करते अपन. इफ like that you're telling, okay fine, when we block, yes, when we block the calcium channels, what will happen, the calcium will try to stay in the blood only, and it may cause hypercalcemia. Okay, this is theoretical value, but the value is very negligible. Because of that, on the serum calcium levels, it will neither cause hypocalcemia nor hypercalcemia. ये बात याद रख लेना. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का रिलेशन कुछ भी नहीं है ऑन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कैल्शियम ऑन द सीरम. क्लियर दिस पॉइंट एवरीबडी? सब लोग समझ गए ये बात? एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? Now, first very important point I would like to tell here. This is very important slide. सब लोग ध्यान से सुनना. यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनना. देखो, first important thing before seeing the classification, mechanism of action and all, we will try to see the uses because this is important. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के यूजेस क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के यूजेस, नंबर 1, very important use. Calcium channel blockers are mainly used in angina. सब लोग ध्यान से सुनना, कहीं भी लिख लेना. First important indication of calcium channel blocker is angina. You know what is angina? Angina pectoris बोलते. Angina pectoris. What is angina pectoris? Okay, listen. Actually अब second year वाले, one day we will discuss this point also about different classifications of angina, उसके treatment क्या है सब. Simply, as of now you understand, angina pectoris is called chest pain. Angina pectoris is called chest pain. It is just the symptom. It is a symptom of coronary heart disease, or coronary heart disease is also called coronary artery disease. Okay, coronary heart disease or coronary artery disease. In this condition, what happens, the coronary arteries will not supply blood to the myocardium, and due to that what happens, patient will have severe myocardial infarction. That means myocardial tissue will be dying. That is called myocardial infarction, and in that case, due to the necrosis of myocardial cells, it will cause pain, and that pain due to CHD or CAD is called angina pectoris. Okay, based on the intensity and based on the amount of perfusion rate into the cardiac myocytes, it is classified into prinzmetal angina, stable angina, अनस्टेबल एंजिना करके बहुत सारे टाइप्स है बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ब्लड परफ्यूजन. ओके, वो सब बाद में. अब देखो, सिंपल सी बात, फर्स्ट यूज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज angina pectoris. If anybody has hypertension, with angina, what will be the drug of choice? CCBs will be the calcium channel blockers. Understood first point? Number two, in most cases means in all elderly patients, elderly hypertensive patients, calcium channel blockers are drug of choice. अब देखो, a patient is suffering with hypertension
whose age is 68 years. 68 years वाला एक patient is having hypertension and he is not having any disorder. So in these older populations we can go simply with calcium channel blockers. उसके examples भी आपको बता दूं मैं. Okay, this is second indication. Number two, number three, calcium channel blockers are particularly used in arrhythmias, arrhythmias, arrhythmias. Okay, this is third indication. If anybody has arrhythmia with hypertension, again calcium channel blockers are drug of choice. And one more point you have to remember: if anybody has tachycardia, tachycardia with hypertension, tachycardia means increased heart rate, tachycardia and hypertension, calcium channel blockers are drug of choice. Along with calcium channel blockers in arrhythmia, along with calcium channel blockers in tachycardia mainly, along with calcium channel blockers in tachycardia and hypertension. Can anyone tell me other drug which is drug of choice in hypertension with tachycardia? Hypertension, very good, beta blockers, very good, beta blockers. Okay, this point you have to remember. And here in arrhythmia, in tachycardia with hypertension, calcium channel blockers सब नहीं देते. I will tell you the classification and then you will understand. Number four, calcium channel blockers are, see, calcium channel blockers are useful in relaxing, they are useful in relaxing uterus smooth muscle, Can anyone tell me there is another antihypertensive drug which will cause uterus relaxation? Antihypertensive drugs which will cause uterus relaxation. Very good, very good, excellent. Not beta blocker, beta agonist will cause relaxation property, not beta blocker. Beta blocker क्या करेगा? Beta blocker contract कर देगा. Okay, actually beta receptors which are present in uterus will relax. That means beta agonist is causing uterus smooth muscle relaxation. So see, calcium channel blockers are useful as delaying delay in de, delay in parturition बोल सकते हैं. Delay in preterm labor. Preterm labor means preterm labor. अब देखो, the normal gestational period is between 38 to 40 weeks. 38 to 40 weeks. Okay, अगर किसी पेशेंट में 38 वीक से पहले लेबर इंड्यूस हो रहा है, if we go with these drugs, we can stop the labor. That means preterm labor बोलते हैं उसको. preterm babies डिलीवरी हो गया तो क्या होगा? There are so many complications, no? So to prevent that, we can go with calcium channel blockers. And here many calcium channel blockers are having teratogenicity, but based on the potency and based on the efficacy and safety, we will go. Anyways, one thing is calcium channel blockers will relax the uterus smooth muscles, and through that it will delay the preterm labor. This is another advantage we can go with hypertension. Okay, next, see, one more very important point. If a patient is suffering with hypertension and asthma, what will be the drug of choice and what will be the contraindication? What will be the indication and what will be the contraindication? Which drug is used and which drug should not be used? फटाफट बोलो. Beta blocker or ACE inhibitors should not be given.
should not be given. Beta blocker plus ACE inhibitor should not be given. AC inhibitors थोड़े केसेस में सिचुएशन डिमांड करे तो दे सकते हैं, इफ पेशेंट इज हैविंग कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, but beta blockers are strictly contraindicated, particularly non-selective in asthma. So asthma में beta blocker and AC inhibitors are not safe. Then if anybody is having hypertension and asthma, which drugs are safe, which drugs are effective? AR भी दे सकते हैं, AR भी दे सकते हैं. Here simply you can go with calcium channel blockers. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एक चीज़ याद रख लो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर हैविंग वाइड रेंज ऑफ सेफ्टी. ओके, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन यूज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन मेनी डिफरेंट कंडीशंस. वाइड रेंज ऑफ सेफ्टी उसके बारे में भी बोल दो, आई टेल यू दी इंडिकेशन, उसकी सिग्निफिकेंस. ओके चलो, तो हाइपरटेंशन है, आस्थमा है, तो अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आराम से दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एनी adverse effect. Clear? Clear this point everybody? और next, और कितने हुए? 5 हुए, 5 हुए. लिख ले रहे ना आप लोग, ध्यान तो भी, यू ट्राई टू मेमोराइज और यू ट्राई टू रिमेंबर और यू ट्राई टू राइट समवेयर. ओके, नाउ some more important indications for calcium channel blockers. Hema Budula, are you following? Yes, yes. Okay, चलो सुनो, अब सुनो. Other very important indications of calcium channel blockers. There is a condition called peripheral vascular peripheral vascular disease or disorder. Peripheral vascular disease or disorder. So in peripheral vascular diseases, you know what is peripheral vascular disease? Peripheral vascular aneurysm. Peripheral vascular aneurysm करके एक disease condition है. Actually all the blood vessels in the peripheral areas will be constricted. All the blood vessels in the peripheral areas will be constricted, and they will decrease the perfusion into their peripheral parts. So that condition is called peripheral vascular disease. In peripheral vascular disease also, we can go with calcium channel blockers. So calcium channel blockers with hypertension and peripheral vascular disease. Hypertension and peripheral vascular disease, calcium channel blockers are drug of choice. Can you tell any other drug which is effective in peripheral vascular disease or peripheral vascular aneurysm along with CCBs? Can anyone tell me? I told one point. I told one drug name. There is a condition called pseudo hypertension. कितने लोगों को याद है? Peripheral vascular disease is usually leading to pseudo hypertension. जो भी ब्लड वेजल डिसऑर्डर्स है that will cause pseudo hypertension करके बोले थे आपको स्टार्टिंग में, आपको याद है कि नहीं? See, if anybody is having peripheral vascular disease and hypertension, we can go with ACE. हाँ, सिलास्टोजोल दे सकते, ACE इनहिबिटर्स दे सकते. Silastazole is drug of choice actually. Silastazole is drug of choice. But along with silastazole, AC inhibitors are also having vasodilatory property. उसके साथ साथ दूसरे mechanisms भी है, तो AC inhibitors ज़्यादा effective होगा. और पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिस्फंक्शन नहीं है, ओनली ब्लड वेजल डिसऑर्डर है, ओनली ब्लड वेजल विच इज कॉजिंग हाइपरटेंशन. In that cases we can go with silastazole. Okay, silastazole. And here if any patient has peripheral vascular disease and hypertension, again calcium channel blockers also can be given. They are effective only. Okay, silastazole देना अगर effective नहीं है, calcium channel blocker देना effective नहीं है, तो then we can go at the last with AC inhibitor. So in peripheral vascular diseases we have silastazole, AC inhibitors and calcium channel blockers. These many effective drugs we have. Okay, now next important indication. If anybody is having
if anybody is having diabetes, if anybody is having diabetes, even in diabetic hypertension, we can go with calcium channel blockers. Diabetes, diabetes plus hypertension, diabetes plus hypertension plus proteinuria, प्लस प्रोटीनूरिया, तो ये यहाँ पे कौन सा ड्रग सूटेबल है बोलो? डायबिटीज, हियर हियर कंपल्सरी वी हैव टू गो विथ एसी इनहिबिटर ओनली. एंड अगर पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो इन दिस कंडीशन वी कैन गो विथ सीसीबी, वी कैन गो विथ एसी इनहिबिटर भी दे सकते. ओके, सो इन डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन सीसीबी इज अगेन अनदर drug of choice. And one more very important point, if patient has hyperlipidemia, if patient has hyperlipidemia, hyperlipidemia condition है plus hypertension है, what is the drug of choice? Again calcium. Yes, AR भी दे सकते हैं, श्योर. ARB AC inhibitors नहीं देना. क्यों? ARBs and AC inhibitors should not, and beta blockers also should not be given. देखो, अब ये पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, एक चीज़ याद रख लो, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, ये कंडीशंस में अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं. रिमेंबर दिस एनफ. नाउ लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज if patient's kidney is not functioning properly, or if patient is having chronic kidney disease, kidney impaired patients में calcium channel blockers are most effective drugs. kidney chronic kidney disease patients में calcium channel blockers are most effective drugs. calcium channel blockers के साथ साथ अगर पेशेंट को सीवियर अरिथमियास है, severe tachycardia is there, we can go with metoprolol. Okay, so this is also another very important indication. So देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ये सब इंडिकेशंस है, बहुत सारे इंडिकेशंस है. एंजाइना पेक्टोरिस याद रख लेना, एंजाइना पेक्टोरिस के साथ साथ बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं. इफ पेशेंट हैज एंजाइना पेक्टोरिस एंड हाइपरटेंशन, वी कैन गो विद बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ओके, और एसी इनहिबिटर भी दे सकते हैं टू डिक्रीज द पेशेंट्स हार्ट रेट. एल्डरली पेशेंट्स में हाइपरटेंशन है किसी को, तो with gunshot point you can directly go with calcium channel blocker. Patient is not having any condition, patient is elderly, in this case we can directly go with calcium channel blockers, because in elderly patients calcium channel blockers are very effective. Okay, ये क्या था? अर्थमिया. यस, अर्थमिया कंडीशंस में हाइपरटेंशन है, तो देन आल्सो वी कैन गो विथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ओके, तो ये सब इंडिकेशंस आप लोगों को समझ में आ गया. इंडिकेशंस यू ट्राई टू रिमेंबर. ओके, डन. now we will try to see the classification of anti-hypertensive calcium channel blockers. यहाँ पे बहुत important, this is also very important. See, in last class I already explained, I'll go very fast here. In calcium channel blockers we have two types. In calcium channel blockers we have two types. One is dihydropyridines बोलते. In this we have, याद रख लो, amlodipine, I will tell only once, amlodipine, nicardipine, nifedipine. This is nicardipine, this is nifedipine, and we have felodipine, ANNF, felodipine. We have isradipine, isradipine. We have clevidipine, clevidipine, and finally we have nimodipine. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. देर आर सो मेनी डाइहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव्स. डाइहाइड्रोपिरिडिन्स में ये सब ऑल डिपिन्स.
amlodipine, nicardipine, nifedipine, felodipine, isradipine, clevidipine and nimodipine. यहाँ पे द फर्स्ट वन एम्लो एंड नीमो, AN याद रख लो, एम्लो नीमो, एम्लो नीमो. Amlodipine we have 2.5 mg, 2.5 mg tablets, 5 mg tablets and 10 mg tablets. 10 mg sustained release मिलता ज़्यादा. So all these are different strengths of amlodipine. Amlodipine is very 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 commonly used antihypertensive drug in many indications. Just now we have discussed, in all those conditions amlodipine is very commonly used, especially in older populations. Amlodipine is mainly used. Firstly we have to start with 2.5 mg. If blood pressure is not controlled, we'll increase the 5 mg. If it is not controlled, we'll go with 10 mg. And only single dose after food in the morning can be given, because its duration of action is between 18 to 24 hours. So it can be given only once daily. So amlodipine डिटेल में समझ लो, amlodipine is very important drug. Next one is nimodipine. निमोडिपिन के दो तीन मेन फंक्शंस है, याद रख लो. निमोडिपिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज निमोडिपिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर among all these डाइहाइड्रोपिरिडिन्स, एम्लो, निकाडिपिन, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, इसराडिपिन, ये सब में से निमोडिपिन particularly can cross blood brain barrier. Nimodipine only from the dihydropyridines, nimodipine can easily cross blood brain barrier. Now what do you know about blood brain barrier? Who will tell? What do you know about blood brain barrier? Very good. Actually, see, all the drugs which are present in the blood, they should enter into the cells in the peripheral tissues from this blood endothelial tissue only, no? But see, there are some very delicate tissues. Number one, testis in the males. Number two, placenta in the females. And number three, brain in males. क्या brain females में नहीं रहता? Brain in females also. Okay, we have three tissues: testis in males, placenta in females and brain in both males and females. Okay, in these tissues, the 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 barriers, actually the barriers or the blood vessels which are surrounding around these tissues, the blood vessels which are surrounding around these tissues are are mainly covered. I'll try to draw one blood vessel. Okay, one blood vessel. Just imagine this is a blood vessel or blood capillary which is surrounding around any of the tissue. On these blood vessels, some extra covering or the endothelial cells which are present in these capillaries are tightly packed, because of the specialized coverage, because of the specialized tissue. They will not transfer drugs into these tissues. Okay, so in testis we have specialized transport mechanism which is called blood testis barrier, special barriers. And in placenta also we have blood placenta barrier, and in brain also we have blood brain barrier. So the blood vessels which are surrounding around these tissues will have a specialized barrier. एक दो layers ज़्यादा रहते हैं इसमें बस. What they'll do, they will not allow some drugs to enter into these tissues, into these tissues, which will protect the tissues. Okay, those are called specialized blood brain specialized blood vessels. So यहाँ पे nimodipine one special character is there. Nimodipine can cross blood brain barrier and it can enter into the brain. So if anybody who is having
who is having blood vessel disorder in the brain, blood vessel disorder in the brain. In those conditions we can go with nimodipine. One basic example I want to add here: if anybody is having ischemic stroke, ischemic stroke due to ischemic stroke due to there is a condition called aneurysm in subarachnoid area, aneurysm in subarachnoid area, or aneurysm in the brain. Okay, or sometimes patients will have cerebral vasospasm. Some patients will have cerebral vasospasm. So in that cases nimodipine can be the drug of choice. Why? Because they will cross blood brain barrier, and in the blood brain barrier they can easily decrease the vasoconstriction, or they'll cause vasodilation, and through that it will improve the blood flow. अगर ब्लड सेरिब्रल एन्यूरिज्म के वजह से ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होने के बाद समटाइम्स व्हाट विल हैपन, cranial blood vessel rupture hoga and it will cause severe hemorrhage. So in that cases also nimodipine can be the drug of choice to stop or to decrease the blood vessel ruptures. Okay, so nimodipine is drug of choice in certain blood vessel disorders in the brain. डाइहाइड्रोपिरिडिन समझ गए सब लोग? ये सब बाकी के निकाटिपिन, फेलोडिपिन, नेफिडिपिन, ये सब दे आर वेरी सिमिलर टू एम्लोडिपिन. ओके, यस, एनी डाउट? ट्रांसिक इसके, हाँ हाँ, उसकी ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक हाँ दे सकते हैं. Oh, in that ischemic attack we have to make sure whether really the blood vessels are having aneurysm or not. अगर सही में भी blood vessel aneurysm है, अपने को what we do angiography में पता चल जाता, Doppler test में पता चल जाता really if they are having blood vessel disorder or not, और CT में भी पता चल जाता, CT scan में. Okay, based on that we can go. Without knowing, without diagnosis, if we go, it may cause some problems. Okay, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक में से निमोडिपिन से भी ज़्यादा अपने को दूसरे ड्रग्स भी है. अगर हिमोरेज है, we will go with diuretic simply. Or if patient has severe risk of thrombosis, or if patient has risk of other conditions, we will go with anticoagulants. और बहुत सारे ड्रग्स है अपने पास, depend on the patient's condition simply. Okay, so these are about dihydropyridines. And next one is non dihydropyridines. और एक बात, एक चीज़ यहाँ पे dihydropyridines याद रख लो, dihydropyridines और blocking calcium channels on blood vessels. Let me repeat the point. Dihydropyridines are blocking calcium channels particularly on blood vessels. जहाँ पे भी blood vessel disorders लग रहा और patient को hypertension है, तो in that cases dihydropyridine should be the drug of choice. older populations में dihydropyridines commonly use करते. इसका आंसर कौन देगा? Who will tell me the answer? Why dihydropyridines are drug of choice in older populations? Anybody from the class? Stiffness of blood vessels, loss of elasticity in the elder populations, and roughness of blood vessels. ये सब बहुत सारे reasons है. एज बढ़ते गए तो the elastic nature of the blood vessels कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, पेशेंट को वासो कंस्ट्रिक्शन होके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस है. वहाँ पे पर्टिकुलरली अपने को ब्लड वेसल डायलेट करना है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन इन ओल्डर पॉपुलेशंस वी विल गो विथ डायहाइड्रोपिरिडिन्स. अब देखो, नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन्स विल ब्लॉक
calcium channels on the heart. And here in non-dihydropyridines we have two drugs, one is diltiazem and one is verapamil. Okay, diltiazem and one is verapamil. और ये दोनों में देखो डी डी दिल, डी मीन्स दिल, दिल मीन्स हार्ट. diltiazem जो है, very 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 important, diltiazem has two actions. Diltiazem can block the calcium channels on the heart and also on the blood vessels. Clear this point? And verapamil is particularly specific for only heart. Only heart. यहाँ पे डिल बोले तो ओनली हार्ट नहीं है, डिल यहाँ पे diltiazem is blocking the calcium channel blockers on the heart as well as on the blood vessel, whereas verapamil only it is blocking calcium channels on the heart. You understood this difference? Everybody understood this difference? अब देखो डिल, ये नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन्स के मेन इंडिकेशंस है. एक्चुअली the indications of dihydropyridines is different and indications of non-dihydropyridines is different. Just now I told all the indications. Wherever patient is having arrhythmia or wherever patient is having increased heart rate, in that conditions non-dihydropyridine should be the drug of choice. And wherever blood vessel cause is there in hypertension, dihydropyridines will be the drug of choice. एंजेना पेक्टोरिस में डाइहाइड्रोपिरिडिन दोगे या नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन दोगे? बोलो. नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन. वेरी गुड. अब अर्थमिया है, अर्थमिया में डाइहाइड्रोपिरिडिन दोगे या नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन दोगे? वेरी गुड, अगेन नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन. ओल्डर पॉपुलेशंस है, देयर आर नो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, व्हिच वन विल यू गिव? डाइहाइड्रोपिरिडिन और नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन? Very good. Patient is having asthma and hypertension. Which one you will give? Patient is having asthma and hypertension. Which one will you give? दोनों में से कौन सा भी दे सकते हैं. यहाँ पे अब दोनों में से कौन सा भी दे सकते हैं. अब यहाँ पे diltiazem is there. Diltiazem has both actions. तो वहाँ पे एग्जैक्ट अपने को ब्लड वेजल पे एक्शन नहीं चाहिए, हार्ट पे नहीं चाहिए, दोनों पे चाहिए, तो diltiazem दे सकते हैं. ऐसा अपन जस्ट कॉमन सेंस यूज करने का हॉस्पिटल में. ओके, समझ रहे? अगर पेशेंट को पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज के वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में हाइपरटेंशन है, तो व्हाट विल यू गिव? डाइहाइड्रोपिरिडिन्स और नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन्स? पेरिफेरल डाइहाइड्रोपिरिडिन्स. वेरी गुड. तो अब देखो, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू ऐड हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. sometimes patient will have hypertension, and along with hypertension patient will have migraine. Do you know this point? Patient will have hypertension and migraine. Yes or no? हाँ, साउंड नहीं आ रहा आपको? आवाज नहीं आ रही? हाँ, अगर किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट को माइग्रेन है, तो विच इज द अफेक्टिव ड्रग फॉर हाइपरटेंशन एंड माइग्रेन? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? हाइपरटेंशन एंड माइग्रेन, एनीबडी? निमोडिपिन. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. निमोडिपिन दे सकते हैं. और एक चीज बोलो, माइग्रेन का मेन कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ माइग्रेन? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? व्हाट इज द कॉज ऑफ माइग्रेन? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? Migraine is caused due to the vasodilation.
Migraine is caused due to the vasodilation of blood vessels in the brain. Recently what they found, पुराने ज़माने में scientists used to tell that migraine is caused due to vasoconstriction. Let me repeat the point. In previous classes, scientists used to think that migraine is caused due to vasoconstriction. But nowadays, what we found? We found that migraine is caused due to vasodilation. कौन से vasodilation? ट्राइजिमिनल ट्राइजिमिनल नर्व के अंदर जो भी ब्लड वेजल्स है, ट्राइजिमिनल नर्व के अंदर जो भी ब्लड वेजल्स है, इफ दैट ब्लड वेजल्स आर डायलेटिंग इट विल कॉज माइग्रेन. ट्राइजिमिनो वास्कुलर पाथवे बोलते, ट्राइजिमिनो वास्कुलर पाथवे. बाद में आप गूगल करके चेक कर लेना. ट्राइजिमिनो वास्कुलर पाथवे, ट्राइजिमिनल नर्व के आसपास में अगर ब्लड वेजल डायलेट हो रहे तो व्हाट विल डू? it will cause it will cause migraine. So in this case can we go with vasodilators? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते या नहीं दे सकते? पुराने ज़माने में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए तो माइग्रेन कम हो जाता करके दे यूज टू प्रिस्क्राइब CCBs. बट नवेडेज दिस इज़ वेरी रिसेंट स्टडी में, दिस इज़ वेरी रिसेंट स्टडी. आप पुराने टेक्स्ट बुक्स में देखें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन माइग्रेन करके रहता. इन ओल्डर टेक्स्ट बुक्स इफ यू फाइंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैन बी गिवन इन माइग्रेन. एंड और थोड़े ओल्डर बुक्स में बीटा ब्लॉकर्स दिए तो भी माइग्रेन कम होता करके रहता. बीटा ब्लॉकर्स आर आल्सो गिवन फॉर माइग्रेन करके बोलते. But the main drugs what we for migraine, actually we have so many newer drugs. Actually this migraine is caused due to the release of substance P, neurokinin K, neurokinin K, neurokinins करके थोड़े रहते. ऐसे बहुत सारे pathways we are having many new drugs for this pathways. ओके, माइग्रेन के बारे में कभी भी अपन डिस्कस करेंगे. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, if anybody is having migraine, we have to treat the patient according to the patient's cause. We should not go with the calcium channel blockers blindly, because पुराने टेक्स्ट बुक्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए तो माइग्रेन कम होता करके बोलते. बट सी, when calcium channel blockers are given, when calcium channel blockers are given, patient will have severe headache. Do you know this point? Calcium channel blockers will cause headache. That is the main adverse effect. I will tell you in adverse drug reactions, I will tell that also. तो यहाँ पे थोड़े टेक्स्ट बुक्स में माइग्रेन करके लिखे हुआ रहता. यू शुड नॉट फॉलो दैट पॉइंट. आई वुड लाइक टू stress. Clear everybody this one? Now we have seen dihydropyridines examples. In that amlodipine, nimodipine, don't forget amlodipine is most commonly used drug, and nimodipine is particularly used for patients with cerebral aneurysms or cerebrovascular constriction, because it will cause blood brain barrier and through that it will cause the vasodilation. Okay, so nimodipine function is that. And remaining next is non-dihydropyridines. In non-dihydropyridines we have diltiazem and verapamil. Diltiazem has two actions. One is it blocks the calcium channel blockers on the heart as well as on the blood vessels, and verapamil particularly it blocks the calcium channel blockers on the heart. Clear? These two classifications, examples and drugs, इसके बारे में डिटेल में समझ गए? Clear everybody? Yes. Yes. माइग्रेन का ट्रीटमेंट अपन बाद में देखेंगे. माइग्रेन का ट्रीटमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देना, ये चीज याद रख लो बस. क्यों नहीं देना? सी देर आर इसके ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है. सम फिजिशियंस क्या करते, दे विल राइट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दे विल प्रिस्क्राइब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. बट सी अपने को ऑलरेडी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विल कॉज हेडेक. अब साइड इफेक्ट में आएगा वो. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑलरेडी दे आर कॉजिंग हेडेक, सो विल इट बी गिवन इन माइग्रेन? विल इट बी?
अगर माइग्रेन में अपन दिए तो भी, माइग्रेन में अगर दिए तो भी अपन डिल्टियाजम या वीरापामिल देना, वीरापामिल दिए तो ओनली हार्ट के ऊपर एक्शन दिखाएगा। ओके, ऐसे ही इसके ऊपर सो मेनी controversies we have, but you don't forget कि it is not given for migraine. ओके, चलो माइग्रेन के बारे में एक लेक्चर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, that one. Now we will try to see the mechanism. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के दो मैकेनिज्म्स है, बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स, वन इज डायहाइड्रोपिरिडिन्स and one is non-dihydropyridines. Non-dihydropyridines will block the calcium channels. Non-dihydropyridines will block the, just imagine this is a calcium channel on the cell membrane, cell membrane of the cell membrane of the heart. Just imagine this is heart cell membrane, and here it is a blood vessel. डायहाइड्रोपिरिडिन्स ब्लड वेसल के ऊपर जो भी है वहाँ पे ब्लड का ब्लॉक करेगा ना, हियर इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ओके, कैल्शियम चैनल्स. So when dihydropyridines are given, dihydropyridines will block the calcium channels on the blood vessels, and it will stop the entry of calcium ions into the blood vessel smooth muscles, and through that it will cause or it will not cause depolarization, and through that what it will do, it will cause vasodilation. Name the drugs which will cause vasodilation other than calcium channel blockers. Anybody from the class? Number one, ACE inhibitors. ACE inhibitors. Next, any other drugs which will cause vasodilation? Any other drug which will cause vasodilation? फटाफट बोलो. We have nitrates. We have nitrates. Nitrates will cause sodium nitroxide NO, and through that it will cause vasodilation directly. ओके, इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट, एनी अदर ड्रग विच विल कॉज वासोडाइलेशन? वी हैव डायरेक्ट वासोडाइलेशन. यस यस, हाँ, क्या बोले आप शिवानी? सिलास्टोजोल. सिलास्टोजोल, that will also cause vasodilation, no? Okay, and we have some other vasodilators. कौन से vasodilators है? We have hydralazine. Okay, मिथाइल डोपा, वेरी गुड, मिथाइल डोपा. मीनोक्सिडिल, वेरी गुड. और अम्योडरोन. आई एम एक्सपेक्टिंग वन, यू आर नॉट टेलिंग दैट. और वासोडाइलेशन कौन करेगा? फटाफट बोलो, और वासोडाइलेशन कौन करेगा? अल्फा ब्लॉक. हाँ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, वेरी गुड. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड अल्फा ब्लॉकर्स. अल्फा ब्लॉकर्स नहीं करते. अल्फा वन ब्लॉक. सिलास्ट सिलास्टोजोल इज phosphodiesterase 3 inhibitor. It is not alpha blocker. ओके, देखो अब सुनो. वासोडाइलेशन, डाइहाइड्रोपिरिडिन्स और कॉजिंग वासोडाइलेशन एलॉन्ग विथ डाइहाइड्रोपिरिडिन्स. और दूसरे ड्रग्स वासोडाइलेटर्स क्या है अपने पास? क्या है? एसी इनहिबिटर्स. एक्चुअली एसी इनहिबिटर्स डायरेक्ट वासोकंस्ट्रक्शन वासोडाइलेशन नहीं करता. among its actions, vasodilatory action is one action. Okay, and nitrates directly they'll cause vasodilation only. Nitrates का action directly vasodilation ही होगा. We have isosorbide mononitrate, isosorbide trinitrate, glyceryl trinitrate, glycerin. ये सब ड्रग्स जो है दे आर नॉट ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल. ओके ना, ग्लिसरीन नॉट ग्लिसरॉल. ओके, सो दे आर नाइट्रेट्स बोलते हैं उसको, नाइट्रेट्स. व्हेन दिस ड्रग्स आर गिवन nitric oxide, NO, is released by the drugs, and that NO directly goes into the blood vessel and it will dilate. NO is direct vasodilator. Okay, and silastazole we have already seen, phosphodiesterase 3 से vasodilation कर देगा. hydralazine, minoxidil, methyl dopa, all alpha 1 blockers, tamsulosin. ओके, एंड ये क्या था?
ए क्या था? व्हाट इज दिस ड्रग? आई फॉरगॉट. नाइट्रेट्स. ये ए से. ओके. Amiodarone, amiodarone. Okay. So these are all different drugs. These are all different drugs which will cause vasodilation. Okay. Just point correlate करना इसलिए I am telling all this. और इसके अलावा दूसरे भी रहते हैं. Alcohol also causes vasodilation. Alcohol और histamines. Okay. और prostaglandins. Yes. Atorvastatin. I don't know. Okay. चलो. जो भी है. और इससे अपने को बहुत सारे दूसरे ड्रग्स भी रहते हैं, बट आई हैव दिस ड्रग्स, आई हैव आइडिया ऑफ दिस ड्रग्स ओनली. ओके. चलो दूसरे ड्रग्स भी होंगे. चलो. तो डाइहाइड्रोपिरेटिन्स क्या करते हैं? दे विल ब्लॉक द कैल्शियम आयंस ऑन द ब्लड वेजल्स एंड थ्रू दैट इट विल कॉज वासोडाइलेशन. And one important point you have to remember, the drugs which are causing vasodilation, the drugs which are causing direct vasodilation, the main side effect will be headache. The main side effect will be headache. And the next one, they will cause hypotension. वासोडाइलेशन जो ड्रग कर रहा ना, उसका साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन होगा कंपलसरी. अगर किसी भी पेशेंट में, हियर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एनी पेशेंट इज लीडिंग टू वासोडाइलेशन, किसी भी पेशेंट में वासोडाइलेशन हो रहा एंड वासोडाइलेशन एसोसिएटेड हाइपोटेंशन हो रहा है, वासोडाइलेशन एसोसिएटेड हाइपोटेंशन हो रहा है, immediately what our brain does, our brain will think that अरे your blood vessels are dilating, immediately you have to increase your blood pressure. Blood vasodilation will cause hypotension. If patient has hypotension due to vasodilation, brain will activate नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा और फटाफट क्या करेगा? ब्लड वेजल को कंस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, नंबर वन. एंड नंबर टू, डायरेक्टली इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट. It will increase the heart rate. That is called a very important term, that is called reflex tachycardia. Reflex tachycardia. Let me repeat the point. सब लोग यहाँ पे ध्यान देना. अगर कोई ड्रग वासोडाइलेशन कॉज किया, if any drug causes vasodilation, what vasodilation does? Vasodilation will cause hypotension. Vasodilation will cause reduced blood pressure. When patient has vasodilatory hypotension, immediately patient sympathetic activity increases and it will increase patient's heart rate, which is called reflex tachycardia. What is reflex tachycardia? What is reflex tachycardia? What is reflex tachycardia? Very good. Vasodilatory hypotension will cause reflex tachycardia to improve the patient's blood pressure. Okay. कभी भी पेशेंट में वासोडाइलेशन के वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है तो क्या होगा? ब्लड वेजल कंस्ट्रिक्ट करने की फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, बट ब्लड वेजल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट इज टेकिंग वासोडाइलेटर. अगेन द नेक्स्ट मैकेनिज्म व्हाट वी हैव टू इम्प्रूव ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट. सो हार्ट रेट बढ़ाने की कोशिश करेगा. आवर बॉडी इटसेल्फ विल ट्राई टू इंक्रीज द पेशेंट्स हार्ट रेट, तो इट विल कॉज रिफ्लेक्स टाइकार्डिया. सो when dihydropyridines is given, first side effect is headache, second side effect is hypotension, and third side effect is reflex tachycardia. Clear this point everybody? Clear this point everybody? समझ में आया सबको? तो अब किसी भी पेशेंट में डाइहाइड्रोपिरिडिन के वजह से रिफ्लेक्स टाकिकार्डिया हो रहा है तो आप क्या करोगे? Dihydropyridine is causing reflex tachycardia. What will you do? You will stop dihydropyridine and you will go with non-dihydropyridine. Yes?
Why? Because non-dihydropyridine, what it does, it will stop tachycardia, it will decrease heart rate, simple. Or if any patient is taking dihydropyridines, dihydropyridine से रिफ्लेक्स टाकिकार्डिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई इन सम केसेस calcium channel blocker is always combined with beta blocker. Calcium channel blockers are always combined with beta blocker. Why? Beta blocker, what it does, beta blockers will reduce the reflex tachycardia which is associated with dihydropyridines. Are you all following me? कोई सो रहे नहीं ना, सब नींद में है? यस, ओके, वेरी गुड. चलो, तो अब अपन क्या देखें, डाइहाइड्रोपिरिडिन्स एंड नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन्स. नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन्स के बारे में भी अपने को मैकेनिज्म के साथ पता भी चल गया. नाउ very important point I want to add here. I told 3 adverse effects associated mainly with dihydropyridines. अब देखो, और बाकी के adverse effects देखते. Very first adverse effect is headache. आवाज आ रही सब लोगों को? हेडेक कौन काज करता? हेडेक will cause dihydropyridines. Next, patient will have dizziness. What is dizziness? Check karana. Very good. Dizziness. Why? Even dizziness is also caused by dihydropyridines. Okay. Next side effect, patient will have flushing. You know what is flushing? Redness on the face, redness on the cutaneous tissues. What is the difference between flushing? And angioedema? कौन बोलेगा? What is the difference between flushing and angioedema? फ्लशिंग में जस्ट रेडनेस रहता, एंजियोएडिमा में एडिमा रहता, सिंपल. बोथ आर मेन कॉज्ड ड्यू टू सेम mechanism. Okay. Next, there is a condition called peripheral edema, which is very similar to angioedema. Peripheral edema. Peripheral edema is, this is particularly seen in क्या बोलते, पेडल एडिमा होने के चांसेस ज़्यादा रहता. ओके, दैट इज अनदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ calcium channel blockers. Even this is also caused due to dihydropyridines. Flushing also caused due to dihydropyridines. याद रख लो, dihydropyridines के साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं और नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन्स के साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स टाकिकार्डिया. यू नो व्हाट इज रिफ्लेक्स टाकिकार्डिया, राइट? रिफ्लेक्स टाकिकार्डिया कौन कॉज करेगा? डाइहाइड्रोपिरिडिन अगेन. नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट्स, there is a condition called gingivitis. Or gingival hypertrophy. सुने नाम कभी भी? gingivitis, gingival hypertrophy. सेकेंड ईयर वाले सब लोग सुने हैं. Have you heard about gingivitis and gingiva hypertrophy? Have you heard about this condition? अपने टीथ के ऊपर जो जिंजिवा इज देयर, कहाँ पे? ओके, चलो. ओके, जिंजिवाइटिस का केस देखे थे. वेरी गुड. ओके, ये बहुत कॉमन केस है. इन एवरी 10 पॉपुलेशंस, एवरी 10 मेंबर्स 7 to 8 मेंबर्स को जिंजिवाइटिस रहता है. इन एवरी 10 मेंबर्स 7 to 8 मेंबर्स को जिंजिवाइटिस रहता. इट इज़ वेरी कॉमन कंडीशन, वेरी कॉमन कंडीशन. बट
जिंजिवाइटिस है, ऐसे लोगों को पता नहीं है कि दे आर हैविंग जिंजिवाइटिस। ओके, उसमें भी बहुत सारे हैं, माइल्ड, वेरी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विल कॉज जिंजिवाइटिस एनीवेज, इसके बारे में मैं बाद में समझा दूँ। और नेक्स्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर समटाइम्स causes constipation, constipation, and very important adverse effect of calcium channel blockers is bradycardia, bradycardia, bradycardia कौन करेगा बोलो, bradycardia कौन करेगा, non-dietitians। और finally we have one very important adverse effect which is called hyperprolactinemia, hyper hyperprolactinemia, prolactinemia। Okay, even this is also another adverse effect that can be seen with calcium channel blockers। ऐसा नहीं है कि all calcium channel blockers will cause all these adverse effects, किसी किसी पेशेंट में कौन सा भी एक दिखता या नहीं दिखता, पॉसिबल, दिस आर ऑल पॉसिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि ऑल पेशेंट्स डेफिनेटली वन और दी अदर एडवर्स इफेक्ट्स कंपलसरी दिखता करके नहीं है। ओके, इट, दिस आर ऑल पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स। क्लियर? थोड़े पेशेंट्स में हेडेक होता नहीं होता, थोड़े पेशेंट्स में डिजीनेस होता नहीं होता, फ्लशिंग आ सकता है नहीं तो नहीं, पेरिफेरल एडिमा भी आ सकता है नहीं तो नहीं, रिफ्लेक्स टाइकार्डिया प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, एंड जिंजिवाइटिस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्राडिकार्डिया इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, especially with non-dihydropiridines and hyperprolactinemia. These are all common adverse effects that can be seen with calcium channel blockers. Now we will try to see the drug interactions. In last class I told one drug interaction. याद रख लो सब लोग ध्यान से सुनना यहाँ पे। If patient is given with dihydropyridine, if patient is given with dihydropyridine, in dihydropyridine it may cause reflex tachycardia. In dihydropyridine we can give beta blocker, we can give beta blocker, but if patient is taking non dihydropyridine, याद रख लो, if patient is taking non dihydropyridine we should never give beta blocker। थोड़े टीचर्स समझाते क्या बोलते पता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विल कॉज रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया एंड इट शुड बी गिवन विद बीटा ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ बीटा ब्लॉकर कभी नहीं देना है। वही एनीबडी, why non-dihydropyridine should not be added with beta blocker, anybody from the class? Very good, severe bradycardia हो सकता है। In last class about beta blockers I told one drug called verapamil। अपन verapamil नहीं, verapamil particularly should not be given with beta blocker। Why? Because verapamil is particularly heart selective, diltiazem is having both actions। Okay, now one more point, calcium channel blockers are particularly in non-dihydropyridines we should avoid in bradycardia, non-dihydropyridines should avoid in bradycardia। किसी भी पेशेंट में ब्राडिकार्डिया है तो उस कंडीशन में नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन नहीं देना है, और यहाँ पे बीटा ब्लॉकर के साथ नहीं देना है। एंड नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन अगर आपको देना है तो और एक कंडीशन नहीं है, वहाँ पे नहीं देना। कहाँ पे? इफ़ एनी पेशेंट इज टेकिंग खोलिनर्जिक ड्रग्स, खोलिनर्जिक ड्रग्स, खोलिनर्जिक ड्रग्स दे लिए, खोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ अगर अपन नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन दिए तो क्या होगा, क्या होगा, हार्ट रेट और कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा, एंड दैट मे कॉज लीथल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, दैट्स इट। दिस, यही थोड़े कॉमन सेंस यूज़ करें तो ड्रग इंटरेक्शंस आ सकते हैं, उसके ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शंस कुछ भी नहीं है। Clear everybody? These are the important points about calcium channel blockers which are usually given in hypertension in hospitals.